टुडेस वर्ल्ड इज रैपिडली चेंजिंग। और अगर आपको किसी स्टार्टअप में या कंपनी में काम कर रहा है, so they'll see your resume, but they'll definitely ask for your proof of work कि आपने एक्चुअल काम क्या किया, आपने किस प्रोजेक्ट्स पर काम किया। सो इन टुडेस पॉडकास्ट आई स्पोक टू रितेन देवनाथ, जो फ्यूलर के फाउंडर है। फ्यूलर इज अ प्रूफ ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शोकेस योर वर्क, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेवलपमेंट के कुछ भी प्रोजेक्ट्स किए हो, आप उधर शोकेस कर सकते हो। एंड while seeking opportunities, just share that proof of work Fuller link so that they can scan all your profiles. So in today's podcast मैंने रितेन से उसके लाइफ के बारे में बात किया कि how he changed different cities because of his military background, और entrepreneurship के बारे में भी बात किया, how a company should work, और फ्यूलर के बारे में बात किया कि how he is building फ्यूलर। इफ यू लाइक क्रिएटिंग समथिंग, वेदर इट्स प्रोजेक्ट या कुछ भी कंटेंट हो, कुछ भी अगर आपका वो क्रिएशन माइंड है, सो सी द पॉडकास्ट इन द एंड, यू विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम रितेन। एंड या लेट्स गो टू द पॉडकास्ट। आई मीन हमारी जो एक चीज जो कॉमन है हम दोनों में, आई थिंक वो लाइक जो स्विचिंग प्लेसेस हम कर बचपन में बहुत किया था। एज इन सिंस यू आर फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड और मेरे हेलो फादर भी लाइक सिविल सर्विसेज में है, सो हमने बहुत स्कूल चेंज बहुत किए। सो राइट, so like I have learned a lot, जो भी अभी like 6 to 7 स्कूल चेंज कर चुका हूँ, अभी 12th में हूँ, आई थिंक इट्स माय 6th स्कूल। तो my first question to you is कि like जो भी मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है ऑफ योर फादर, तो उससे like what have you learned, और जो भी स्कूल चेंज किए, जो भी नया एनवायरनमेंट रहा है, what are your learnings from your childhood from that experience? I guess exposing to extreme environments, that is something I have learned, trust me. ठीक है, so imagine I have done my schooling from one single place. ठीक है, so all of this thing would be very much monotonous. ठीक है, हर दिन same, it would be similar thing every day, like every day you are doing the same thing and like it's over, right? तो for me the biggest learning here would be the exposure, the extreme condition में आप कैसे behave करते हो, right? And you make friends very quickly in that way. You are exposed to such environment where you are you're living with people who are very much new, right? Every 1 or 2 year, after every 1 or 2 year, right, you are talking to them, and you make friends very quickly. So you can say for me, people skill, I guess this was something I have learned very quickly in my life. Okay, especially moving to different places, I have learned like understanding people, okay, what they want, okay, how can I help them, right? How can I actually like how can we like grow together, right, in the same environment, right, and play together especially. So there's one more thing I would like to mention, especially from my military background, right? Like that is exposure to different sports. So kahin pe it was about football, it was about volleyball, okay, it was somewhere it was about cricket, okay. So like I believe I had my days back then, different environment में, I got to play a lot of sports with different people out there. ठीक है, so ये कुछ चीजें हैं, so I would like to share this. Yes. आई मीन जो स्पोर्ट्स का बोला, आई मीन वो ट्रू है, क्योंकि मैं भी ऐसे स्पोर्ट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, और उससे बहुत लर्निंग्स ड्रॉ करता हूँ। लाइक बट माय मेन फोकस वाज मोस्टली ऑन बैडमिंटन, क्योंकि मैं आई डोंट नो इफ यू नो, प्लेस इंदौर के पास में हूँ। मैंने अराउंड 2014 या 15 में स्टार्ट किया था खेलना, Okay. एंड या तब से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रहा है, और मेनली इन दोनों फोकस पर रहा हूँ। सो Wow, that's great. लाइक वन ऑफ माय हैप्पीएस्ट थिंग्स, अगर कुछ 2022 से ड्रॉ करता तो वो हमारा प्ले है। तो मैं Yes. किधर भी गया हूँ, जो और वो लोग जो फ्यूलर को जानते हैं, सबको बताता रहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बैडमिंटन खेला है, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो। एंड मैंने इस चीज के बारे में मैंने लास्ट न्यूज़लेटर में भी शेयर किया था। सो Oh wow. Okay.
So But I would definitely check it out. Sure. And means a lot. ठीक है? क्योंकि trust me, it would have never happened. ठीक है ना? And it was you only, right? It was you only कि like you DM'd and you shared कि यार हम खेलेंगे, right? And pretty surprising कि it काफी जल्दी हो गया, right? It happened pretty quickly, right? Within a week. So yeah, even I enjoyed playing. हाँ, मतलब वो हम वो पॉलीगॉन के इवेंट में मिले थे रोड शो में, और ऐसे ही प्रियांशु ने बोला कि वो बैडमिंटन खेलता है, सो लाइक दिमाग में आइडिया आया कि मैंने कभी पूछा था एक हफ्ते पहले कि हम बैडमिंटन खेलेंगे, सो खेला वो, लाइक वन ऑफ द बिग थिंग गुड थिंग्स हैपेंड. Same here, man. Like I really enjoy it. And I enjoy playing with people, right? Especially that is when I believe you can totally understand someone. ठीक है ना? Sports में क्या होता है ना कि you are into different things, right? You are into full yourself. ठीक है? When you're working, बहुत time you can pretend a lot of things. आप pretend भी कर सकते हो. But when you're playing, when your body is moving, right? You are just moving here and there and stuff. You're thinking. आपका पूरा overall body काम करते हैं एक साथ, right? That is pretty nice. That is why I love sports. ठीक है? This time it was about badminton. Maybe down the line we'll play cricket as well. ठीक है? And other sports. ठीक है? हाँ, मतलब हम ऐसे ही जगह जगह घूमेंगे, किधर क्रिकेट खेलेंगे, फिर बैडमिंटन, टेनिस. Sure. Done. एंड लाइक मैंने आई थिंक रणवीर शो या उधर या शायद से तुमसे सुना था कि अगर किसी का कैरेक्टर जानना है तो उसके साथ स्पोर्ट्स खेलो, तो पूरा उसका कैरेक्टर बाहर आ जाता, लाइक वो स्पोर्ट्स. Yes, correct. So I totally believe this. So this is something I totally believe in. ठीक है? So all the people I have interacted with or maybe become close with them. तो I guess ये सब में sports एक बहुत बड़ा role था, and even trust me, like even all the currently हमारा जो जितना सारा VC and investor thing का मतलब वो चल रहा है ना, so even there I am asking them the same question, like do you play, right? Are you into sports? ठीक है? So I totally want this कि एक दिन ऐसा भी रहेगा all the VCs are playing together, in the sports arena, right? जहाँ पे you can actually know a person by heart, right? How they think about you in extreme condition, right? So sports में you have to think very quick, right? Not just in sports and in a lot of other spheres, but I believe sports is something that brings us together, right? Two people together or many people together. So to know a person closely, I believe sports is such a great way. Team player पता लगता है ना उससे, team playing and everything. Yeah. और वो भी एक कम्युनिटी फैक्टर भी आ जाता है, राइट? तो लाइक एवरीवन कम्स टुगेदर, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कोई लाइक आपस में खेल रहे, कोलैबोरेशन हो रहा है, और उसी लाइक कोलैबोरेशन की ऐसे याद आया, लाइक जब मैं फ्यूलर कम्युनिटी में आया, लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज आई हैव एवर बीन. तो वन ऑफ द एक्टिव कम्युनिटीज जो मैं कह सकता हूँ, और मोर देन लाइक कितने भी 400 क्रॉस होने वाला है WhatsApp. Yes, we are close to 400. Yes, on WhatsApp. But on Discord we have more than 1,500 people. Yes. Yeah, I mean the best communities I have ever been so far in the last 2 years. तो वही फ्यूलर के बारे में पूछना था कि कैसे बिल्ड कर रहे हो, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट, कि क्यों स्टार्ट किया, अभी करंट सिचुएशन क्या, कैसे बिल्ड कर रहे हो, right? The team status. So okay, right. Sure. So I'll start with the community thing first. ठीक है? So in case of community, हमारा like see the the mission is very simple. ठीक है? Very simple. Okay, कि to build an ecosystem for someone where they can show what they can do. ठीक है ना? Help them become invincible. Okay, help them become unstoppable. ठीक है ना? Help them become confident in their career. ठीक है? ये तीन चीजें हमने like डाला है. ठीक है ना? That is very soon you are going to see a very sweet animation. ठीक है ना? Fueler, be invincible, be unstoppable, and be confident. ठीक है ना? तो ये this is something I totally we ourselves, the whole team believes in कि like people are limitless, humans are limitless. ठीक है ना? And creation like give them that bandwidth where they can present what they can do. ठीक है ना? Creation is such an human like core experiences जहाँ पे you can put up and share with other कि यार मेरे को क्या आता है नहीं आता है. ठीक है ना? And at times there are people
like they're not able to express कि मुझे क्या आता नहीं आता ना. They are being judged based on their resumes and a lot of other things. So like we are trying to change this thing with Fueler. आप Fueler में आओ, you put up your work, you showcase all the things that you have done, okay, and based on that, on different career needs, you can use Fueler for different career needs. That is something we totally want, okay. And again, like Fueler is something, the name itself, Fueler, it represents an individual, right? I as an individual, what I can do, right? And you don't believe Fueler also, the name came from our team also. ठीक है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. तो like we were having different name previously, ठीक है, उसका एक टैगलाइन था, ठीक है, फ्यूलिंग इंस्पायर्ड कंपनीज. तो वहां से फ्यूलिंग से फ्यूलर का नाम आया, ठीक है. सो जो फ्यूलर जो था, हम टीम में जितने लोग काम कर रहे थे, वी वर फ्यूलर, ठीक है. तो उसके बाद देयर वाज दिस टाइम जहां पे हमको लगा नहीं, हमको रिब्रांडिंग करना होगा, ठीक है ना. वी हैव टू थिंक ऑफ अ नेम दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, आल्सो पीपल कैन रिलेट देमसेल्फ विद, ठीक है. तो हमने लगा कि व्हाई नॉट लाइक मेक दिस फ्यूलर a mainstream thing, why not give out this name to a lot of people out there जो हमारे तरह है, like they are passionate, they are curious, right, they want to do things in their life, right. तो हमने बोला कि यार चलो इसको मतलब मेन स्ट्रीम बनाते हैं, and let's take it to the world where people can call themselves fueler, right. तो वहीं से like हमारा फ्यूलर का हर एक चीज आया. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट टुडेज टाइम, वी आर वेरी मच close to 8,000 members taken or on Fueler, and it's pretty crazy, and things have changed wildly for us because of Twitter, ठीक है. So on the last year itself, we were very much new on the Twitter, ठीक है ना. हम धीरे धीरे पाई grow कर रहे थे, and I believe all the credits I'll give here to the community people, ठीक है ना. They have seen us, they have supported us in on different situations, ठीक है ना. There were time जब हमारे कोई follower या फिर कुछ वो नहीं था, but now I see the kind of effort that they are giving. It's phenomenal, right? It's like people are sharing about Fueler with their friends. They are sharing, hey bro, like you should use this, it will help you. So there was this, I was on this call recently, ठीक है ना. So there was someone, I cannot look all the name here, but she was from Bhopal, ठीक है. And she is currently learning, she's having this course from Masai School, ठीक है. Masai School is one of the best cohort that I know, okay. तो उसमें she told me her brother told her, suggested her Fueler, ठीक है. And she wasn't able to understand कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, okay, on Fueler. So we have an option where you can book a call, ठीक है, with the team members, with the experts, ठीक है, कि how to use Fueler, like you can get on a call, especially with me, ठीक है ना. मैं ही कॉल अटेंड करता हूँ. So I was explaining the whole stuff and everything, ठीक है ना. So I told her कि currently maybe there is this glitch which allows us sometime, we'll work on it and get back to you, ठीक है. We are a very small team, 4 लोग हैं. And she was like कि यार 4 लोग हैं, and like I thought you were a big company. She was comparing this with Figma and with Adobe, ठीक है. Then like LinkedIn, she was like यार ये कोई बड़ा ही कंपनी होगा, ठीक है. And that is when she was like so surprised to know, and मेरे को तभी वो पता लगा ना कि how she got to know. And then she told me कि यार her brother told her to use it, it's a very great platform. Also the best part was she also found her friends on the platform, ठीक है. फ्यूलर में एक डिस्कवर पेज है जहां पे आप जाके काम देख सकते हो लोगों के, ठीक है, किसने क्या बनाया, ठीक है ना, वो क्या है नहीं है. तो यू कैन कनेक्ट विद देम, ठीक है, यू कैन ईमेल देम, यू कैन डीएम देम ऑन व्हाट्सएप और अदर सोशल चैनल्स. तो वो एक बहुत अच्छा चीज है जहां पे पीपल आर एक्चुअली कमिंग टुगेदर, सीइंग ईच अदर वर्क एंड बिल्डिंग कनेक्शन. तो ये कुछ चीजें. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. और like and regarding the team, you answered. Yeah, regarding the team के team, बारे में. we are 4 people actually, ठीक है. उसके अलावा we have a huge community, ठीक है. And so saying that we are just 4 people, it would be like very much like unfair, ठीक है, क्योंकि 4 people actually full time काम कर रहे हैं. Apart from this, we have more people on team Fueler. They're working very very hard, ठीक है ना. All credits and respect to these people, ठीक है ना, कि यार they have chosen Fueler as a team where they want to grow, right. They want to make it to next level, they want to take it to next level, and they see it as a family, right. And all the things that we have in the call and stuff ना बहुत अलग ही level का discussion होता है, ठीक है ना. बहुत मजा होता है ना. We have fun, right. There are so many things, right. And I really want कि someday we are going to be in the single office working together, playing sports, going on a travel, having trips and a lot of other things. So I hope that day happens very soon, ठीक है ना. और वो कम्युनिटी का भी जो हम अभी जो अभी फ्यूलर के मीटअप्स हो रहे हैं, लाइक दिल्ली या जो भी लाइक ऐसे सिटी मीटअप्स हो रहे हैं, कैलकाटा, बैंगलोर. तो आई थिंक अगर जैसे कि और
1,000-2,000 ग्रुप्स बनेंगे, राइट, डिफरेंट सिटीज के. ये सब कम्युनिटीज साथ में आएंगे इन सिटी, और वो खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं. सो Yeah, of course. आई मीन इट्स So जस्ट अ स्टार्ट. yeah, correct. So we have a plan someday down the line. We will have this Fuelers Fest. ठीक है, उसका ब्रांडिंग अभी से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना. Fuelers Fest, where like we'll be inviting people from different cities, ठीक है. And yes, there are few things we have in mind, ठीक है ना, where we are going to discuss about like creation, ठीक है ना, creation work, ठीक है ना. See all of the things around us, ठीक है ना, हर एक चीज if you see आप उठा लो, ठीक है, वो किसी ना किसी का बनाया हुआ चीज है. Someone has created this, someone somewhere have created this, right? And हम आज उस चीज को यूज कर रहे हैं. तो imagine the importance of this, right? तो उस चीज को हमको सेलिब्रेट करना है ना. We need to celebrate creators, right? We need to celebrate the inventors, right? The discovery, the people जो लोग किए थे. तो that is one of our approach. I hope this thing happens very soon. Fuelers Fest होने वाला है, and you will be invited definitely, ठीक है. I hope you will come. ठीक है ना. कौन से भी सिटी में हो, आई विल ट्राई टू कम और फुल्ली पार्टिसिपेट करूंगा. Yes, that will be crazy. Yeah. So regarding Fueler, like I had a question with reference to LinkedIn कि I think किसी ने पूछा था, next time पूछता हूँ कि it's Fueler is basically showing your work, कि कोई proof of work है तुम्हारा, कि Correct. तुम दूसरों को दिखा रहे हो कि तुमने ये काम किया है. पर लोग LinkedIn पर भी जाते हैं, and it's a massive platform. तो why do you think लोग Fueler पर आएंगे और instead of LinkedIn? तो how do you differentiate yourself from LinkedIn? और LinkedIn actually क्या है? So correct. What kind of audience is there on what kind of audience is there on LinkedIn? So yeah. Correct. Sure. Absolutely. So my first question would be to that person, ठीक है ना, कि आप जब LinkedIn में जाते हो, ठीक है, आप किसी का प्रोफाइल में विजिट करते हो, so what are the chances that you go and see their work precisely? The only बस आप काम कितने लोग को देखते हो जाके, मतलब I hope I'm making sense here. Whenever you are visiting someone's profile on LinkedIn, ठीक है, what are the chances that you go and see their work precisely? ठीक है ना, most of the time क्या होता है कि you get distracted, ठीक है ना, वहां पे हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं. Then a simple analogy here would be, ठीक है ना, LinkedIn is a social network, ठीक है, and हम अभी एक बस टूल है. We're a tool, simple tool that that helps you create beautiful looking portfolios, ठीक है. Whereas LinkedIn is a social network, ठीक है, it's a professional network, ठीक है, where people come then put up their status, वो अपना मतलब daily activities हर एक चीज वो डाल रहे हैं. This is totally different from Fueler, ठीक है ना. There is no comparison actually, ठीक है. So it's very much similar to, let me explain this. Even though we have mobile, ठीक है, even though we have a speaker on our phone, ठीक है, but still we purchase podcast का mic, right? Why? Because podcast ka mic is something, very much, the audio experience is very much different, right? It's cool. Even though we have that phone में speaker, phone में microphone होने के बाद भी हम podcast अलग से podcast mic खरीदते हैं. Why? Because for elevated experience of, sound, right? उससे हम कितना कुछ कर सकते हैं. So that is what Fueler is all about. Fueler is a full stack work portfolio where you put up all your projects, and it is not limited to only design, only development, ठीक है ना, only marketing thing, okay? You put up all your works there, ठीक है. It's very simple. आप अपना काम बनाओ, काम करो, वहां पे उसको जाके publish करो, that's it, ठीक है. उसके बाद वहां पे आप अपने different career needs के according create custom portfolios, ठीक है, जो आपके आप बहुत जगह apply कर सकते हो. And it's that simple, okay? Also at time it's very easy to use. Why? Because उसमें आपको जो लिंक होता है ना, वो easily shareable होता है. आप कहीं भी उसको भेज सकते हो, share कर सकते हो, दे सकते हो, right? So that is something we are trying to do with Fueler. We are trying to, make people focus on their creation, their projects more, rather than focusing them on the building website part, जहाँ पे आपका learning curve बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. But on Fueler, ठीक है, उसका learning curve आपका है ही नहीं. आप आते हो, काम publish करते हो, and you create beautiful landing pages आपके different काम के. That's it, ठीक है ना. So that is it. I hope this answers help that person. हाँ, मतलब it truly helps कि जितना मुझे समझ आ रहा है, Fueler is more of a showing your work, जो भी आप काम कर रहे हो वो आप उधर लिंक कर सकते हो. Whereas LinkedIn, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग उधर उनकी स्टोरी शेयर करते हैं. Yes. और
आई थिंक जब हम फ्यूलर के नहीं फ्यूलर नॉट जो पॉलीगॉन केस में मिले थे, तुमने बताया था कि Correct. लिंक्डइन इज मोर ऑफ अ स्टोरी बेस्ड प्लेटफॉर्म कि लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काम मिस हो जाता है, हम ज्यादा देखते नहीं उधर. Yes. सो Yes. Yes. लाइक फ्यूलर इज मोर ऑफ अ टूल कि आप शेयर लिंक्स आपके काम का लाइक शेयर कर सकते हो टू Correct. whosoever you want to share it. Correct. Exactly. So our goal is to make, create on this niche. ठीक है, हमारा niche ही है proof of work. ठीक है, this is something we totally stand for, and I believe the world need more such platform or more such tool that celebrates your proof of work, that celebrates your work. ठीक है ना, उसके बाद अलग अलग चीज. So imagine so there is this story I want to share with you very recently that has happened. So there was this event on Bangalore, right? Eat India. I hope you know this, Yeah, I right? know. It happened very recently, December mein, first week mein, right? So what happened is, now I after this event was over, I got this DM from a person, okay, and he told me, bro, like there is this something I want to tell you. I got this job, okay, in just 10 minutes, okay. And what happened? I shared my Fuller profile. They saw it and they liked it. Okay, they asked me some question and I answered them, and they were like, come join us, work with us. Man, that was the highest benchmark I could ever think of. Just sharing your work right away, and see, even the company employees, whatever, they just want to see what you can bring to the table, right? And I believe proof of work is such a brilliant thing, okay, where it cut the noises, isn't it? Where you are just claiming that, hey, I know this is something you can refer to, maybe after that I will have a call and a lot of other things. But here it's not the same. You just share your profile, you share your link, okay, someone sees it, okay, they explore it, okay, they'll ask you some questions, and whenever it's clear, you'll be like, hey, like this is cool, let's take it forward, right? So this is how it works, and this is the power of Fuller, where your work speak for yourself, right? And at the same time, the discovery page, it helps you give discovery. So if today, if you go and search on the internet, okay, your name, so definitely it's going to index on the internet, and I can promise you it comes on the first page of on the Google search, right? The way we have done optimization and SEO, so it's going to increase over time and again and again. या मेरा ट्विटर प्रोफाइल आता है जब मैं प्रणव पवार सर्च करता हूँ. Right. So Twitter तो यार वो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, but I'm just saying on first page you'll get the result in the first page. ठीक है? So that is the thing. Yeah. So like you just mentioned about your team, like सिर्फ 4 लोग हैं टीम में, तो Right. like how hard it is to like work as a founder and like in the entrepreneurship startup space, कितना hard होता है, like what like एक सब क्वेश्चन इसका समझ पूछ सकता हूँ कि लोग क्या नहीं समझते स्टार्टअप्स के बारे में, कि like what you have understood in the last 2-3 years. I believe whenever a lot of people go for startup, okay, they underplay it, okay, they underestimate it, okay, they underestimate the cost involved. ठीक है? Lot of people from outside, they see it, okay, they call it very much fancy, but जब आप अंदर घुसते हो, it's very hard. ठीक है ना? Like I believe that is something that needs to change, and whoever is doing startup, they can easily tell this. Okay, even for me, yeah, there has been very much hard time. Even today we have hard time, every day there is this new level coming in, right? You have to take care of a lot of things together, you have to wear multiple hats. ठीक है? You have to take care of customer service at the same time, यहाँ पे ये हो गया, उससे ये बात करना है, वो करना है, ये करना है, right? So there are multiple things happening at a single time, so managing all of these things together, ठीक है ना, by keeping yourself sane, it's very hard. ठीक है? And that is something I would say, over time any startup team would adapt themselves. ठीक है? adapt कर जाते हैं, तो adapt नहीं कर पाते हैं, तो that is very hard, वो fail कर जाते हैं. ठीक है ना? And team में I believe chemistry is very important. ठीक है? The chemistry of understanding of each other and trust. ठीक है? क्योंकि आप अगर झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपने ये करा बट आपने नहीं करा, ठीक है, सो आई गेस वो ना कभी बाहर निकल जाता है. ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें हैं, these are some of the laws of nature that you have to take care of, that is something even for us we are learning. ठीक है? अभी हम नहीं बोलेंगे कि we are very much successful, हमने कुछ नहीं करा अभी तक. ठीक है? Fuller is very very new still. ठीक है? We have no idea कि next year क्या होगा, but every day all the team हम like hard work कर रहे हैं, we are trying to be the best person to work on this idea. There is this saying in startup, you don't choose a startup, the startup chooses you. ठीक है ना? जहाँ पे if you are the right person to work on that idea,
ठीक है ना. All the investor, the market, the customer, ठीक है ना, they want the person to be the first thing कि यार हाँ आप बना रहे हो फिर देन आई विल बी यूजिंग इट, ठीक है ना. तो वो चीज बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना. सो इवन फॉर फ्रॉम पीपल आउटसाइड दे फील लाइक कि मैंने ये ऐप बना दिया तो हो गया, ठीक है. दे फील लाइक कि मैंने अगर ये वेबसाइट बना दिया तो हो गया, इवन आई एम कूल विथ इट. बट ऐसा नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट योर पर्सनल स्टोरी, ठीक है ना. आप कहाँ से आते हो, ठीक है, व्हाट आर चैलेंजेस यू हैव फेस पर्सनली, ठीक है ना. उसको आप कैसे टैकल करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, वेयर यू आर इवेंचुअली हेल्पिंग आउट अ लॉट ऑफ अदर पीपल, ठीक है ना. आप छोटे से शुरू करते हो, 10 पीपल, 20 पीपल, 50 पीपल, 100 पीपल, देन इवेंचुअली लॉट ऑफ पीपल, ठीक है. तो ये कुछ कुछ चीजें इवन आई हैव लर्नड, आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं. यस, Right. Or अभी I'm more focused towards like changing like solving Indian problems, like problem जो भी है like for teenagers हो गया वैसे. For that also like मैं content create करता हूँ और बहुत से लोगों को नहीं पता कि like what it goes into creating good यस, things, right. मुझे भी पहले ऐसे like YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले like पता नहीं था कि कितनी मेहनत लगती है. लाइक यस, स्क्रिप्टिंग रिसर्च करने में 4-5 घंटे ज्यादा, शूटिंग करने में 10 मिनट की वीडियो के लिए तुम्हें 2 घंटे लगते यस, हैं, एंड एडिटिंग के लिए 4 4 घंटे से नीचे कोई टाइम नहीं दे सकता. राइट, सो राइट, सो इट्स सेम एज स्टार्टअप्स. तो या, सो जो भी लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप्स कंटेंट क्रिएशन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट इजी है, जस्ट या, उनको पहले प्रोडक्ट बनाकर देख लेना चाहिए कि कितना इजी होता है वो. right, right. It's very hard. Also, I have massive respect for you. You are just a school student. Okay, तो वो easy नहीं होता. You have to, context switch a lot. ठीक है. Even startup में वो चीज है. But I would say you are working really hard. ठीक है. उस पे content creation इतना easy नहीं है. You are having your own newsletter. ठीक है. You are having your YouTube channel. उसके लिए आपको dedicated time देना बहुत hard होता है. हम तो अपने school life में हम तो बस school and tuition उसी में हमारा वो था, right? It was very hard back then. नेवर थॉट कि ऐसा भी टाइम आएगा जहां पे you'll be doing multiple things, right? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं. एंड ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी, ठीक है ना. मतलब लॉट ऑफ पीपल टेक इट वेरी इजीली. हम अंडरस्टिमेट करते हैं उसको कि यार देख क्या बना रहा है, वो क्या बना रहा है, राइट, कुछ भी बना दे रहा है. तो ऐसा नहीं है. सो दिस इज also this is one of the parameter I judge. I get to judge people, then I get to filter out people in my life, ठीक है ना. If someone is very much respectable toward work creation, कुछ भी हो, आई एम हैप्पी विद इट. आई एम लाइक यार भाई सही हो, ठीक है. बट समवन इज सेइंग ये देखो क्या बना दे रहा है, कुछ भी बना दे रहा है. देयर सी यू विल ऑलवेज फाइंड क्रिटिक्स इन योर लाइफ, राइट, बट यू विल नेवर फाइंड क्रिएटर्स इन योर लाइफ, ठीक है ना. सो एनी क्रिएटर वुड ऑलवेज रेस्पेक्ट ए क्रिएटर एट हार्ट, ठीक है ना. ए क्रिएटर एट हार्ट विल ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर क्रिएटर्स बिकॉज दे ओनली नो how hard it is to create something from scratch, right? वो भी at times you don't get any guidance, ठीक है ना. आपको स्क्रैच से करने होते हैं. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू फेल, पीपल विल क्रिटिसाइज, मजाक उड़ाएंगे, जोक बनाएंगे, मीम बनाएंगे, ठीक है. बट यू स्टिल कीप गोइंग एंड यू लाइक कि भाई करना है, सोच लिए करना है तो करना है, राइट. दैट इज समथिंग वेरी हार्ड. Yeah, or I also truly respect जो create करते content या entrepreneurs, क्योंकि जो हसल होता है ना कि हर दिन क्यूरियस रहना है, हर दिन Yes. इच्छा नहीं है तभी भी सुबह 4 बजे उठकर वो मेल सेंड करना है या वो चीज करना है. एंड Correct. yeah, and to this continuation to this point, I believe कि जो फ्यूलर की audience है, like it's mostly college students या college pass out. Yes. So Gen Zs. I was Mostly Gen Z. I was talking to a friend, यही एजुकेशन और उस पर बात कर रहे थे. तो उसने बोला कि उसने बोला कि नहीं, मैं बोल रहा था कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है क्योंकि मुझे अवेयरनेस और राइट काइंड ऑफ एजुकेशन लोगों को देनी है. बट Correct. दैट पर्सन टोल्ड कि अगर एजुकेशन स्पेस से अगर चेंज करना है तो यू शुड बिल्ड अ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कंटेंट. या पहले प्रोडक्ट करो, बनाओ, फिर कंटेंट Okay. क्रिएट करो अवेयरनेस स्प्रेड या वैसे एडुकेट करने के लिए. Okay. क्योंकि मैंने ऐसे रियलाइज किया कि अगर कंटेंट बना रहे हो तो अभी भी बहुत से लोगों के पास इन रूरल एरियाज मोबाइल नहीं है या हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है.
और बच्चों Okay. के पास मोबाइल नहीं है, लाइक माय टारगेट Right. ऑडियंस लाइक टीनेजर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स. So what do you think कि लाइक पहले प्रोडक्ट या वैसे कुछ बनाना चाहिए या साइमल्टेनियस दोनों चीजें करनी चाहिए? So what is I would back to differ here, ठीक है, like with that person, ठीक है. See, the way, like currently हम जो stage में है ना, like like you'll be surprised to know, ठीक है, कि हमको ना अभी like building से डर नहीं लगता. Building से, like आपको ये चीज बनाना आप बना सकते हो, done. But the hardest part is to crack distribution. ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन आता है ऑडियंस बिल्डिंग से. like how many people know you, ठीक है, आपको कितने लोग जानते हैं, एंड आर दे विलिंग टू यूज योर प्रोडक्ट, ठीक है. तो आई वुड से यार, like content creation should be like the first thing, and there is this rise currently, like where people are creating content, right? वो लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन पहले बना रहे, then they are coming up with their own product thing, कि then I'll do this, I'll do that, right? So in this case I would say कि यार पहले आप audience building अगर कर रहे हो ना, I guess that is you're always doing the right thing here. Also it depends कि आपको कैसा प्रोडक्ट बनाना है फ्यूचर में, ठीक है ना. So if you are building something and you have your target audience with you, ठीक है ना, playing with you, listening to you, talking to you every day, I believe you are winning already, ठीक है ना. Then eventually when you launch your product, it will be very much easy, way easy for you to sell them or maybe onboard them on that platform compared to आप अगर पहले प्रोडक्ट बनाते हो. See, today morning itself, there was this guy. He was telling me, like, bro, like, I don't have any product yet, ठीक है, I don't have this app yet, so how can I work on it? I don't have money as well. I was like कि यार आपका value proposition काफी simple है. You want to help someone, ठीक है ना, and that help can be anything. So you can start it just from a WhatsApp group, ठीक है. And I told him कि यार focus on 100 people, that's it. Focus on first 100 people who are dying and killing each other for you, ठीक है ना यार. वैसे फैन फॉलोइंग, वैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना है, वेयर पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी देयर, ठीक है. तो वो चीज के लिए आपको ऐप का जरूरत नहीं है, ठीक है ना. सो पीपल आर समहाउ बिकमिंग स्लेव टू द सिचुएशन. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि यार मेरे पास नाइकी के जूते होंगे तभी भाई आई एम गोइंग टू बी फिट, राइट. तो ये बहुत ही गलत वो है, राइट. सो यू हैव टू बी so there is one more saying, you don't need the best, right? You don't need the best, right? You need what is best for you, ठीक है ना. आपको वो खुद पिक करके आपको वो करना है. सो वट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग, आपको उसमें देखना है कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, what it is trying to teach me, right? उसी में आप अपना बेस्ट कर सकते हो. तो इन दिस केस आपके केस में भी वही चीज है कि मैं वही बताऊंगा कि like the way you are creating content, that is the massive, like that is going to be massive for you because awareness वहीं से आएगा, ठीक है ना. and it is going to help you eventually when you are going to launch your own product, ठीक है ना, क्योंकि people will already know you कंपेयर टू आप अपना टाइम दे रहे हो प्रोडक्ट में, देन इवेंचुअली आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, नोबडी नोज इट. आई होप यू आर गेटिंग राइट. सो ये एक चीज है ना. Yeah, if you are creating content, so you are already building distribution and audience for yourself. So eventually when you launch your own product, ठीक है, so it will be very very easy for you to introduce your product to some of your already known people, and then वो अपना फिर there is this dominoes effect, तो वो dominoes effect फिर आएगा उसके बाद, ठीक है ना. So that is a different thing. या तो लाइक मैं ऐसे मनीष पांडे का एक कोई पॉडकास्ट देख रहा था और उन्होंने बोला कि लाइक अगर तुम कंटेंट बना रहे हो, ट्रीट इट लाइक अ स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप भी लाइक कंटेंट क्रिएशन भी आगे ग्रो हो रहा है. करेक्ट. तो लाइक जो 2016 जब जियो आया उसके बाद और मैसिवली ग्रो हुआ. Correct. और इंडिया में अभी ग्रो होने वाला है. तो उन्होंने भी बोल रहे थे कि लाइक जस्ट ट्रीट इट लाइक अ स्टार्टअप. तो बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हो थ्रू यूट्यूब चैनल. अगर वही अगर तुम्हें 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो तुम्हारे पास 2 मिलियन की फैन बेस या लॉयल ऑडियंस है जो कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए. करेक्ट. सो व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोडक्ट, व्हेन यू मेक अ प्रोडक्ट विद, जो तुमने बोला, तुम वो 2 मिलियन में से 1 मिलियन तो वो खरीदेंगे लोग. सो या यूज करेंगे. Just leave that number as well. Just take 10% only. That's it. Yeah. ठीक है. The whole number के 10% भी आप ले लो. I guess that is enough. That is more than sufficient. ठीक है. And that is, see, Pareto principle applies everywhere. ठीक है ना. And the way you told me कि यार वो भी startup का, and that is true. सही में वो सही है, ठीक है ना. And you didn't believe यार YouTube चैनल के लिए भी फंड रेजिंग हो रहा है आज के टाइम में, ठीक है ना. So like that is cool, right?
So people are treating it as a startup only, right? जहाँ पे you can eventually build a brand, ठीक है? Then you can upsell and you can bring out other product lines and stuff, ठीक है? With that brand, ठीक, उसके बाद फिर आप अपना खुद का startup बना सकते हो उससे, ठीक है ना? So there are multiple things. An academy is the biggest example for this, right? They started with a YouTube channel, isn't it? So eventually it's a startup right now. So I believe the example हमारे सामने ही है, isn't it? Yeah, like physics वाला भी हो गया है, उन्होंने Yeah. कितने साल कंटेंट बनाया YouTube पर, Yes. अभी like it's a unicorn. So Correct. So see, that is the thing, right? मतलब content, and I believe creators have the biggest leverage. ठीक है, when they are creating content and they have a huge distribution, then eventually when they introduce their own product, तो यार उनको काफी like फायदा होता है, and that is the reason like also that journey ना it makes you humble. ठीक है ना? And most of the startup entrepreneur or like founders that I talk with, they have a lot of ego, trust me, ठीक है ना? उनको लगता है कि मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया and people are going to go crazy. ठीक है ना? So somewhere this process of creating it gives you humility. ठीक है ना? आपको एक आता है कि respect आता है दूसरों के like against me, right? हाँ, मतलब like if someone is doing something, so I have a massive respect for them. जो कि eventually आप अगर stealth में बनाते हो, ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हो, आपको लगता है कि मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, ये पूरा दुनिया चेंज कर देगा, तो most of the time we are living in deception, ठीक है ना? तो this is why आप अगर पहले content create करते हो, and eventually if you are building a product, that thing really helps, ठीक है ना? And trust me, it really helps, it always helps, ठीक है ना? तो एक और क्वेश्चन था रिलेटिंग बिजनेसेस. सो डू यू थिंक लाइक अगर हम कोई बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हैं, विल इट चेंज इंडिया एंड will eventually creating businesses change India in the future, the solving problem part? What do you think? Business of what? like मतलब like कौन सा niche में? Like अगर हम किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम थ्रू बिजनेसेस या वैसे सॉल्व करते हैं, डू यू थिंक creating making startups would solve those problems? Like Yeah, it is already solving. Yeah, मतलब it is already solving, right? So the thing is, the catch here is we need more. ठीक है, Israel is the biggest example for this. The way Israel has come out of all the क्या बोलूं scratch stories. It's crazy. There is this book called Startup Nation. ठीक है, बहुत ही मस्त book है. Like I believe I feel also like a lot of startup or aspiring entrepreneurs, they can read this book. It's really nice. It needs patience to read that book, ठीक है? And like I would say every country, every nation, ठीक है ना, startup में काफी like so imagine 10 years back we didn't have much startup, right? But today see the number is huge and it is impacting a lot of lives, isn't it? So आप Zomato ले लो, आप Rapido, people are making money out of it. So that is a great thing, right? You are offering someone and it is acting as a bridge, so that others can make money out of it. I guess that is the biggest impact a startup can have in someone's life. Okay. So if you are asking me the question, I would definitely say, yeah, definitely this is the case. But एक दो से नहीं होगा, we need minimum 100 of them. ठीक है ना? क्योंकि that is how a country or a nation improves. That is how a country or nation the quality of living improve होते हैं. Also the people become visionary over time. ठीक है ना? अगर आपको challenges ही नहीं मिल रहा है, तो nobody would think beyond that, right? अगर आपको challenges मिलेंगे, if there are constraints, so I believe that is when you are going to put in effort, right? That is when you are going to come up with new ideas and new innovation कि कैसे उसको हम और better कर सकते हैं, right? So we need more of those. एक दो से नहीं होगा, ठीक है ना? We need more of these startup examples and stories so that like the ecosystem can grow. Yeah. तो अगर कोई first time founder है, so what do you think कोई 3 या 5 advices जो एक first time founder को देखना चाहिए? Okay, so they have to read. ठीक है, their reading should be their default like setup. ठीक है ना? Default system configuration होना पड़ेगा. They should read. ठीक है ना? Because the way I see reading is very like very different. I feel reading is like consumption. ठीक है ना? आप as a human, how can you learn something? ठीक है, I believe reading is one of those primary thing. आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, आप सुन सकते हो, but the way you read something now, I guess it has much more liberty and much more freedom and leverage. ठीक है ना? आप जब पढ़ते हो कुछ compared to आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, ठीक है ना? So any startup entrepreneur, I would say, yeah, read a lot, ठीक है, because you have to learn a lot. It's not easy. Startups are not easy,
ठीक है, you have to learn a lot, you need to have this intuition power जहाँ पे आप if you are taking a decision, ठीक है ना, you are taking the better than average decision. This is something I have learned from Warren Buffett, ठीक है ना, where he says कि even if I'm taking, see, I cannot take the best decision, but at least I am making sure that I am taking a better than average decision, ठीक है. So for that reason I would say read a lot, ठीक है. Then writing is also a very important skill where you are communicating with your team very transparently also, you know what you are saying, right. बहुत टाइम में क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता. सो राइटिंग इज वन ऑफ दो स्किल दैट हेल्प्स यू इन सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे, बट व्हेन यू आर राइटिंग यू आर एक्चुअली किलिंग ऑल द वेस्ट वाले थॉट एंड यू आर एक्चुअली डिस्टिलिंग द इंपॉर्टेंट थॉट्स, ठीक है. राइटिंग एंड रीडिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, सोशल में इंटरनेट पे like growing on internet is very important, having a presence on internet is very important. आप could take any medium, could be YouTube, it could be Twitter, could be your LinkedIn, could be your Instagram, any channel. Okay, try to grow on channel, create content. Okay, like try to build your audience because it will eventually help you, in your like distribution for your startup. ठीक है, तो ये कुछ चीजें that I would say like very important है. उसके अलावा तो यार talking to customer is also very important, ठीक है ना. I get this like a lot. आज सुबह भी I got a DM where someone was asking me this question कि hey, can you validate my product, ठीक है, can you tell me like this product will work or not. So the only reply I told him कि यार see, I'm not a market here, I cannot validate this product here. You have to go talk to your customers, right. You have to go and talk to your users, ठीक है ना, कि आप ये चीज करोगे, लाइक आप अगर ये चीज करते हो तो कितना देर तक आप करोगे, डू यू हैव एनी फीडबैक फॉर अस, राइट. तो इसके लिए एक बुक है द मॉम टेस्ट, ठीक है ना. द बुक इंट्रोड्यूस यू विद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वहां पे आपको बहुत सारे मस्त क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको पूछने चाहिए आपके यूजर्स को. यूजर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है ना. इफ यू बिल्डिंग समथिंग एंड इफ यू फील कि यार आपने बेटर प्रोडक्ट बनाया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, तो गो टॉक टू यूजर कि जो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एंड टेल देम कि हे लाइक मैंने ऐसा कुछ बनाया है, सो वुड यू लाइक टू ट्राई इट आउट. आई स्टिल डू इट, ठीक है. मेरे को जब कोई भी दिखता है कि कोई ये चीज यूज कर रहा है, आई टोटली रीच आउट टू देम एंड टेल देम कि हे लाइक वी हैव बिल्ट समथिंग लाइक दिस, दैट विल ईज योर प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना. आपको ये चीज नहीं करना पड़ेगा, आपका यू विल बी लूजिंग योर ट्रैक. एट द सेम टाइम यू वुड हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग विथ यू सो दैट यू कैन रीच आउट टू एनीवन एंड इम्प्रेस देम, ठीक है. तो आई बिलीव टॉकिंग टू कस्टमर इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, ठीक है, जहाँ पे हम बस बनाते रहते हैं, सो मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स आर इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं, सो दे आर वेरी मच इंट्रोवर्ट इन नेचर, ठीक है. सो आई बिलीव ये क्वालिटी दे नीड टू चेंज, राइट, जहाँ पे दे आर टॉकिंग टू पीपल. स्टार्ट विथ योर फ्रेंड्स इटसेल्फ, फ्रेंड्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स से बात करो आप, ठीक है. देन मे बी टॉक ऑन द इंटरनेट, इट कैन बी एज सिंपल एज एंगेजिंग विद समवन ऑन ए कमेंट सेक्शन, ठीक है. वहां से फिर इवेंचुअली यू मीट विद देम, डीएम करो उनको, ठीक है ना, फिर कॉल पे जाओ, मीटिंग करो. सो देयर आर लॉट मेनी वेज यू कैन टॉक टू पीपल, टॉक टू योर कस्टमर एंड मेक योर प्रोस्पेक्ट. तो ये कुछ चीजें आई वुड लाइक टू शेयर, Yeah, I mean, last 3 years में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, ट्विटर मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया था लॉकडाउन की Yes. शुरुआत से, क्योंकि लाइक कुछ करने को था नहीं. जिंदगी में पहली बार 24/7 मोबाइल मिला था इंटरनेट कनेक्शन के साथ, राइट. तो लाइक कुछ तो करना था. और मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करो, तो कर रहा था. एंड देन सिंस लकीली मेरा थोड़ा एजुकेशनल क्यूरियोसिटी और वैसा था, तो मैं लाइक रैंडमली लोगों को डीएम करता था ऑन ट्विटर जिनके साथ मुझे बात करनी थी. आई रीच्ड आउट टू देम, दे मोस्ट ऑफ देम रिप्लाइड, और वैसे उनमें से कुछ लोगों के साथ मैं कॉल्स पर गया और 30 मिनट्स 1 आवर तक बातें की. एंड लास्ट 3 years में बहुत लोगों से मिला ऑन द इंटरनेट. तो वन वाज यू, इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे. तो Yes. I still तो remember आप that, लाइक इतने लोगों के साथ बात कर चुका हूँ कि सब कंफ्यूजन होती है कि मैंने उनके साथ पहली बार इंस्टाग्राम से शुरुआत किया था, ट्विटर से, क्योंकि वो right. देखना था. सो लाइक माय दिस क्वेश्चन इज कि अगर किसी को लाइक नए लोगों के साथ मिलना है, अगर किसी को अपनी ट्राइब फाइंड करनी है, Correct. तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज या प्लेटफॉर्म्स यू रेकमेंड कि वो अपनी ट्राइब फाइंड कर सकते हैं, वेदर इट्स अगर कोई वेब डेवलपर है या कोई कंटेंट क्रिएशन में है, या Correct. कोई एजुकेशन स्पेस में जिनको वो कम्युनिटी चाहिए. एंड Correct. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन अ विलेज कि हम सिर्फ अपने विलेजर्स के साथ बात कर रहे हैं, Correct. and through the internet we can talk to the people in the next village. Yeah,
or Correct. in America and other countries. So Correct. what's your take on this? There are multiple platforms, ठीक है. First of all तो यार मतलब like it should come from within, ठीक है ना. The curiosity to learn, okay, the curiosity to make new friends, it should come from within, ठीक है. आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते हो. I used to tell a lot of people कि आप Twitter यूज करो, ठीक है, आप Instagram यूज करो, आप LinkedIn यूज करो, ठीक है, आपको ये मिलेंगे वो मिलेंगे. But they the later when I asked them कि यार मतलब आपने क्यों यूज करना छोड़ दिया, तो they were like I didn't find any motivation to use. तो आपको why पहले क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपको जेन्युइनली सीखना है या फिर यू आर सिंपली फॉलोइंग समवन. आपने देख लिया कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, राइट, और करूंगी. तो आपको पहले वाई वेरी क्लियर होना बहुत जरूरी है. यू नीड टू हैव दिस क्यूरियोसिटी कि हाँ मैं अगर इस प्लेटफॉर्म में जाऊंगा या जाऊंगी तो आई कैन वर्क ऑन समथिंग, आई कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, ठीक है ना, आई कैन लर्न समथिंग न्यू, राइट. अगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा तो मे बी आई विल डीएम समवन एंड आस्क सम क्वेश्चंस टू देम. तो ये आपके अंदर से आने पड़ेंगे, ठीक है. उसके बाद तो आप प्लेटफॉर्म कोई भी चूज करो. यूजुअली आई एम वेरी मच biased toward Twitter because if Fuller exists today, one of the reason is Twitter, ठीक है ना, because we found our tribe, ठीक है ना. हमने कुछ एक चीज बनाया पहले एंड उसको हम वहां पे जाके शेयर किया. वी स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, कनेक्टिंग विद अदर्स, ठीक है ना. उनको हम अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे ग्रो करने के लिए. तो इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ ट्विटर. उसके पहले हम ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव थे बट वी डिडंट फाइंड आवर ऑडियंस देयर, ठीक है ना. बट we actually found our tribe on Twitter. So Twitter is one of the best place, ठीक है. And if you're a student, ठीक है, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, please use Twitter because it will change your life for good reasons, ठीक है ना. And following right people is very important, ठीक है ना. So if you're someone who is very much frustrated कि यार ट्विटर में मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है, I would say यार आप सबको अनफॉलो कर दो, ठीक है. उसके बाद like maybe connect with one person that you really like and see who the person they are following, ठीक है. हम देखो कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है. स्पेंड सम टाइम देयर, गो व्हाट अदर पीपल आर ट्वीटिंग अबाउट. इफ यू फील लाइक दिस पर्सन रेजोनेट्स विथ योर इंटरेस्ट, फॉलो दिस पर्सन, ठीक है. डोंट फॉलो एनी सेलिब्रिटी और एनीथिंग जिनके मिलियन फॉलोअर है, 100,000 फॉलोअर्स है. डोंट फॉलो देम. फॉलो दिस पीपल हु आर वेरी स्मॉल एंड दे आर ट्वीटिंग एवरी डे समथिंग वैल्यूएबल. उनको आपको लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज एडिंग टू माई लाइक mental feed, right, and they are helping me grow, right. वो कुछ चीजें. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज अवेलेबल ऑन डिस्कॉर्ड, ठीक है. आप लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना. इट ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी, ठीक है ना. तो लिंक्डइन एक जगह है जहां पे आपको कम्युनिटीज मिल सकते हैं, where also you can also find people who are talking about things, right. And डिस्कॉर्ड भी एक जगह है जहां पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे. सो देयर आर कम्युनिटीज लाइक ब्लूलैंड, ठीक है, राइपन है, ठीक है, बिल्ड स्पेस है, इवन फ्यूलर इज ऑल्सो देयर, ठीक है. सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन फ्यूलर व्हाट्सएप का ग्रुप एज वेल. इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी कूल, द पीपल आर वेरी काइंड, ठीक है. वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, एंड दे ट्राई टू हेल्प ईच अदर. एंड डीएम्स में भी बहुत हेल्प होता रहता है. सो अभी very recently I got this DM from someone, she was like, hey Riten, like very thank you so much for building this WhatsApp community, because a few days back I asked this question, take on the group, and I got 4 or 5 DMs, people helping me with different resources, okay. See, that is very nice, right? And this is how communities grow. And तो वही कुछ चीजें आपको डिफरेंट कम्युनिटीज में जाने होंगे. डोंट जस्ट सिट आइडल, ट्राई टू एंगेज. लाइक आप रिएक्शन से हेल्प कर रहे हो, एक रिएक्शन डाल दो, या फिर ट्राई टू कमेंट, और मे बी आपको कुछ अगर पता है तो आप वो चीज ला के दो. इट्स लाइक यू आर हेल्पिंग समवन सो दैट इन द फ्यूचर समवन कैन हेल्प यू, राइट. तो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन इफ यू आर हेल्पिंग देम, ठीक है. आप उनको अनकंडीशनली हेल्प करते जाओ, बिकॉज वन डे देयर विल बी पीपल हु आर गोइंग टू स्पीक फॉर यू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू बैक, राइट. तो ये कुछ चीजें कम्युनिटी बिल्डिंग में विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ. इवेंचुअली दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है ना. तो सो फॉर कम्युनिटी आई वुड से यूज ट्विटर, ठीक है. देन गो फॉर लिंक्डइन, ओके. देन देयर इज डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है. ज्वाइन सम ऑफ द अमेजिंग डिस्कॉर्ड सर्वर, ओके, वेयर लाइक यू कैन फाइंड अदर लाइक माइंडेड पीपल, सी व्हाट दे आर स्पीकिंग अबाउट, एंगेज करो उनके साथ, बात करो, उसको रिप्लाई करो. अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो ट्राई टू हेल्प देम इन एनी वे यू कैन, राइट. तो ये कुछ चीजें वेयर यू कैन मेक इंटरनेट फ्रेंड्स, ठीक है ना. एंड दिस थिंग रियली इवेंचुअली हेल्प्स यू अ लॉट, या. और लाइक ट्विटर के साथ भी ऐसा ही है. मैं अपने क्लासमेट्स को बोलता रहता हूँ कि लाइक पहले बोला था कि ट्विटर पे आओ. लाइक आई एम द ओनली पर्सन आई थिंक पूरे स्कूल से जो ट्विटर पर इतना एक्टिव हूँ. तो लाइक आई जस्ट टेल एवरीवन ट्विटर पे जाओ. मैंने इसके बारे में बहुत शेयर किया है, अपनी न्यूज़लेटर में भी शेयर किया है कि लाइक एक डेडिकेटेड न्यूज़लेटर लिखा था कि व्हाई यू शुड बी ऑन ट्विटर.
Twitter. और ऐसे 20-25 recommendations दिए थे कि लाइक इन लोगों को फॉलो करो, मैं इनको फॉलो Right. करता हूँ, ग्रेट पीपल ऑन द इंटरनेट. तो या आई थिंक इन द कमिंग फ्यू मंथ्स लोग आएंगे और इट्स मोस्टली लाइक कि आप ट्विटर पर किन लोगों को फॉलो करते हो, Yes. और आपका फीड आपके माइंड को ही रिफ्लेक्ट करेगा. सो इट्स Correct. लाइक कि आप कैसे सोचते हो वैसा आपका फीड रहेगा. तो Yes. मोस्टली ट्विटर को ऐसे पॉलिटिकल या ऐसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे प्लेटफॉर्म समझते लोग, Correct. पर जस्ट डोंट लिसन टू अभी जो चल रहा है ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म के साथ. जस्ट बी ऑन ट्विटर फॉर द लर्निंग पार्ट, बहुत अच्छे Yeah. करेक्ट करेक्ट. रिसोर्स. फॉलो राइट पीपल, दैट इज द कैच. ठीक है ना, आप राइट पर्सन को फॉलो करेंगे तो आपको राइट फीड मिलेगा, आपका फीड बहुत सही रहेगा, हेल्दी रहेगा. एंड देयर इज दिस हैक ऑल्सो. ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि दिस थॉट इज समथिंग यू डोंट एग्री विद, आप उसमें वो कर लो, मतलब यू कैन म्यूट दैट पर्सन और यू कैन सिंपली से नॉट इंटरेस्टेड, राइट. तो वो अगली बार से आपको ऐसा ट्वीट नहीं दिखेगा, राइट. इट्स वेरी सिंपल. सो आज के टाइम में आई बिलीव, ठीक है ना, द वे यू ईट एनी फूड, ठीक है ना, सो द सेम चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होता है. the kind of decision making we are doing, the kind of qualities we are, ideas we are getting every day, ये हर एक चीज डिपेंड करता है हमारे कंजम्पशन के ऊपर. the kind of conversation we are having with someone, the kind of tweets we are consuming every day, the kind of books we are reading every day, the kind of movies we are watching every day. ठीक है ना, तो हर एक चीज मैटर करता है. सो आज के टाइम में ना लाइक मेंटल कंजम्पशन भी बहुत बड़ा एक चीज है जहां पे आपको इसके बारे में सोचना चाहिए. ठीक है ना, जहां पे यू हैव टू वेरी सेल्फिश अबाउट दिस. I would say selfish not in a wrong way, but selfish about what you are consuming, because it will impact your decision making. It will impact the way you are thinking about someone. ठीक है ना, it would impact the way you are going to approach to someone. अगर आपने राइट कंटेंट आपने कंज्यूम करा है तो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आप यू विल बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग. बट आपने ऐसा कंज्यूम किया जहां पे लगता है कि यार यू आर ड्रेन्ड आउट, राइट, यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. आपको वो सिम्टम्स समझने होंगे कि दिस इज नॉट हेल्पिंग मी, तो मे बी आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, मे बी आई हैव टू change the whole gear, right? Maybe I have to change the kind of consumption I'm having on Twitter or maybe any social media platform. It could be Instagram, it could be like LinkedIn, it could be Twitter, it could be Facebook अगर कोई यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, तो है डिफरेंट चीजें हैं, राइट. राइट. तो लाइक अभी तुमने बुक्स और रीडिंग के बारे में जस्ट बोला, तो करेक्ट. लाइक व्हाट आर द योर फेवरेट आर्टिकल्स जो भी ऑनलाइन पढ़ते हो विच कैन हेल्प बोथ इन लर्निंग पर्सपेक्टिव ओवरऑल, और अगर स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड की कोई क्रिएशन या कोई बिल्ड कर रहा है कुछ भी, तो उसको वो हेल्प करेगा. लाइक कुछ भी आर्टिकल्स, एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स हो सकता है, या कोई इंटरनेट राइटर्स ऑथर्स हो सकते हैं जो यू कंज्यूम अ लॉट. क्योंकि मुझे पता है कि यू आर ट्राइंग टू बिल्ड वेबसाइट एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा रिसर्च कर रहा था ऑन जस्ट सीइंग योर वेबसाइट. तो लाइक मैं बोल सकता हूँ कि इट्स लाइक अ मिनी स्टार्टअप बुक. तुम्हारी वेबसाइट ऐसे बहुत कम वेबसाइट्स है, लाइक पर्सनल वेबसाइट्स, लोगों के जो ब्लॉग्स लिखते हैं. यू आर मोर ऑफ अ क्यूरेटर पर्सन की लाइक हर एक चीज के लिए एक रिसोर्स या वीडियो आर्टिकल दिया है टू बिल्ड अ स्टार्टअप. सो इन शॉर्ट ऐसे कोई रिकमेंडेशंस की इंटरनेट राइटर्स या ब्लॉग्स आर्टिकल्स जो हेल्प कर सकते हैं? Of course, बहुत सारे हैं, like the first one that comes to my mind is Paul Graham. ठीक है, if you are trying to build a startup or want to understand the world, I would say go read Paul Graham. ठीक है, उनके आप बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ सकते हो. ठीक है ना, they are crazy. ठीक है ना, do things that don't scale is one of my favorite. मैं कि हर एक वीक वो बुक पढ़ता हूँ, so that I keep myself on track. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी अदर लाइक आर्टिकल दैट आई एम फैन ऑफ. ठीक है, उसके बाद तो यार इंटरनेट में काफी सारे डेविड पेरेल इज वन ऑफ द गाय, आई रीड हिज आर्टिकल्स, दे आर रियली अमेजिंग. ठीक है, द जर्नलिस्ट इज आल्सो वन ऑफ देम. ठीक है, देन देयर इज दिस द मिस्चिव मैनेज बाय गौरव मुंजल, ही इज द फाउंडर ऑफ अन अकेडमी. तो उनके सबस्टैक के जो न्यूज़लेटर बहुत मस्त होते हैं. ठीक है ना, देन देयर इज दिस वन मोर गाय लेनी. ठीक है ना, ही इज अ प्रोडक्ट मैनेजर, ही राइट्स ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, crazy guy, like one should definitely read his articles. Now he's trying to switch his articles into building a company, so they are really really amazing. तो ये कुछ articles that are on the top of my mind. I often visit them. ठीक है, एंड्रू चैंग is one of the guy. ठीक है,
I love reading his articles. Those are on marketing. Okay, those are on growth. Okay, on marketplace. Okay, on consumer internet. I really enjoy those. Okay, if Seth Godin is also there, then this is Jiva Benedict. So there are so many people. So it depends on me. ठीक है ना कि मैं मुझे अभी कौन सा type पे consume करना है. So then I'll have this list of all the articles. Okay, then I'll go their web homepage and I'll see the latest what they have posted. So I'll sit and I'll binge read all of these things that they have posted, and that's it. Okay, and same for the books itself. So currently, I'm reading this book, Startup, Myths and Models. So it's really amazing. It's one of the underrated book I have read very recently. Okay, uske alawa, books mein to yaar, I'm a reader, more of a reader person. Okay, so the Nawal Al-Malik is one of the best I have read. Okay, The Messy Middle is one of the best I've read. The Art of Start is one of the best book I would say someone, to recommend someone who is trying to start startup. Okay, क्योंकि it in a very simple language, it will help you understand of a lot of things जो कि आपको like नहीं पता होता है. The Art of Start 2.0 by Guy Kawasaki. ठीक है, बहुत ही मस्त बुक है. Apart from this, मैं बोलूँगा कि like आप इंसानों के बारे में पढ़ो. ठीक है, try to read about humans because eventually you have to build for humans. चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो मार्केटिंग कैंपेन हो, ठीक है, चाहे कंटेंट क्रिएशन करना है, ठीक है, read about humans. So there is this book, all the books by Yuval Noah Harari. Read those books. Those books will help you understand about culture, about civilization. ठीक है ना? Then there is this book, The Evolution of Everything. Even that book is very depth. बहुत ही मस्त है. उसमें बहुत सारी चीजें हैं. बहुत सारी चीजें हैं. Then Play Bigger is also one of the book. It speaks about category creation. ठीक है ना? बहुत मस्त है. कैटेगरी क्रिएशन मतलब आपको एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो एंड यू फील लाइक इट कैन बिकम ए न्यू कैटेगरी. रीड दैट बुक. बहुत ही मस्त बुक है वो भी. ठीक है, ऐसे करके लाइक बहुत सारे बुक है. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए लाइब्रेरी फॉर दिस, सो दैट इवेंचुअली आई कैन हेल्प समवन रीड इट. राइट, तो ये कुछ चीजें हैं. सो आई कंज्यूम बोथ आर्टिकल्स एंड बुक्स. या और लाइक मैंने आर्टिकल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से जो भी रिकमेंडेशंस मैंने दूसरे पॉडकास्ट या वीडियोस में सुने, इट्स मोस्टली सराउंडिंग बुक्स कि कोई पर्टिकुलर नीश में कोई बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं. बट आई जेन्युइनली वांटेड टू आस्क अबाउट दिस ऑनलाइन लाइब्रेरी. तो इस साल मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ड्यू टू वेरियस रीजंस आई वाज मोर फोकस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेट. तो articles, yes, articles. You have read articles. You might have read a lot of articles, right? Yeah. So I'm trying to convert the articles of Paul Graham into books. Like book as in मतलब printouts पे, ठीक है ना? Because I feel like the more I spend time with those, it will help me like be more confident. Okay, also help me build a playbook for ourselves. ठीक है. So I'm working on that as well. ठीक है, इंटरनेट पर यार वो तो है ही, एक चीज है. Okay, but apart from that, I feel like मुझे respect आता है लोगों के, like the author. So that is when I buy a book. Also there is this writer Austin Kleon. Even his articles are really amazing. The writer, the author of Still Like an Artist, ठीक है ना, one of the phenomenal book out there. ठीक है ना, then Show Your Work, right? Then Keep Going. बहुत ही मस्त बंदा है. Everyone should read his books. They're very short and crisp. ठीक है. Apart from this, Jason Fried is also there. He's a writer. He's a founder of Basecamp. ठीक है, one of the OG companies out there. ठीक है. So उनके articles आप पढ़ सकते हो. ठीक है ना. So he has a like place on the internet where he puts out article every week. ठीक है, आप पढ़ सकते हो जाके. ठीक है ना. Jason Fried. Then there is this guy Darrek Saber. ठीक है ना. He is the founder of CD Baby. ठीक है ना. उनके books भी बहुत मस्त है. Anything You Want. ठीक है ना. Live or Die. ठीक है. So these are some of the books he has written. Okay, then there's one more guy, Hamartia Numer. ठीक है. He has written books like 46 Rules of Genius. ठीक है ना. Then Brand Gap. ठीक है. 46 Rules of Genius is one of my favorite. It's a classic book. ठीक है. Then there is one more book by Daniel Coyle. That book, it says about the book is about the little book of talent. बहुत ही मस्त बुक है. ठीक है ना. बहुत ही गजब बुक है. उनके सारे बुक्स बहुत मस्त है. कल्चर कोड. ठीक है. देन द बुक ऑफ टैलेंट. सो ये कुछ बुक्स है ना. आई एम मोर ऑफ अ बुक पर्सन. आई कैन टॉक बुक एवरी डे, द होल टाइम. यस, मैंने इंस्टाग्राम पर तुम्हारी वो बुक जो लाइब्रेरी है, वो फोटो तुमने शेयर किया था एज अ पोस्ट या स्टोरी पर. तो लाइक आई थिंक कितने 50-60 बुक्स होंगे स्टार्टअप रिलेटेड. Oh yeah, more than that. बहुत सारे हैं. So I have more than 300 books right now. So 300 books में यार कम से कम like I guess more than 150-200 books तो startups and business के around ही है. Then there are sales book. बहुत कम fiction book है, but self help book भी है कुछ ठीक है. उसके बाद फिर like there are books on business, on money making, on building habits. ठीक है ना. So business में mostly बहुत सारे business में है. ठीक है ना. Like I enjoy it. So
I'm really happy कि मैंने अपना life में early in career I started reading books, ठीक है ना? So it's more than 5 years right now I have read books, you know, but over time अभी कम हो गया books पढ़ना, but I used to read a lot in my college days. कल एग्जाम है and I'm reading book today, ठीक है ना? My roommates can say this, ठीक है ना? They used to tell me कि bro, like कल एग्जाम है, you should read for the exam. And I was like, that thing is not going to help me. The book I'm reading currently, this is going to help me. तो कल एग्जाम है, I'm still reading that book. और सुबह हम लोग उठ के पढ़ के like चले जाते थे, ठीक है ना? And it was Engineer's life, yeah. engineer's life. And Engineer's I life. was I was also really happy कि मैंने computer science लिया था, ठीक है ना? Because see, whatever I was doing on the internet, it was eventually helping me, you know, in my own academic life as well. तो वो एक मेरे लिए बहुत ही बेस्ट डिसीजन था कि I took computer science, and you know, मैं जो कुछ भी कर रहा था इंटरनेट पे वो सारे इवेंचुअली मेरे एकेडमिक्स में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, you know, so वो किसी हद तक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, ठीक है? एंड यस, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, ठीक है ना? बैक इन माय कॉलेज डेज माय रूममेट्स कैन टेल यू दिस, ठीक है? दे वुड से दिस कि आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, यू नो, आई नेवर बहुत टाइम बहुत सारी चीज सैक्रिफाइस करके यू मेक योर प्रायोरिटीज कि मुझे ये करना है, ठीक है ना? सो आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. या लाइक मेरे केस में भी मेरे फादर बहुत एक एविड रीडर है, उनके बचपन से. तो उनके वजह से वो लाइक जब वो स्कूल डेज कॉलेज में थे, वो 1 साल में 2 साल में 1-2 लाइब्रेरीज के सारे बुक्स उन्होंने सारे खत्म कर दिए थे. तो उस रीजन के वजह से घर में मेरे बचपन से बहुत बुक्स है, एंड इसकी वजह से मुझ में भी आदत लग गई रीडिंग की. लाइक बीच में कुछ साल थे जो मैंने इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लाइक रीडिंग करने में, पर लाइक आफ्टर लॉकडाउन वापस स्टार्ट किया रीडिंग. एंड आई थिंक थैंक्स टू हिम कि और रीडिंग की आदत लग गई बचपन से. Yes, एंड that culture. सेकेंडली जो अभी एग्जाम के पहले बुक्स के बारे में बोला था, लाइक मेरा भी 9th में एक सीन था कि अगले दिन साइंस का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम, और एक दिन पहले मेरे दिमाग में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का आइडिया आया था. तो ऐसे मेरा दिमाग पढ़ाई के बाहर चल रहा था. सो मे बी ऐसे लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द स्कूल कुछ ऐसे करना चाहता था, तो वैसे किया. Nice. That's pretty crazy, ना? ये भी मैंने आज नया सीखा. See, like, you know, even before your exam, you have thought of creating a YouTube channel. तो ये भी बहुत like सही था. Amazing. Yeah, I mean, So, नहीं बोलो. हाँ, it's all about creating ना. मैं वही बोल रहा हूँ, like मतलब creating content, right? आप लिखते हो. Even the best form of, you know, simple way of, you know, creating is writing. ठीक है, आप writing करते हो, like आप लिखते हो कुछ, and I believe, you know, मैंने आज तक जितने से मतलब close friends बनाया ना, it's all because of their writings. You know, I have read their writings, what they have done, because उससे ना आप लोगों को judge कर सकते हो, उससे आप like लोगों को समझ सकते हो कि वो कितना depth में सोच रहा है, right? So writing is not easy. Writing is a very hard skill to have. ठीक है ना, वो easy नहीं होता, isn't it? Yeah, I mean, like it depends कि आप like writing किस फॉर्म में कर रहे हो, पर in most cases writing is reflection of your mind. कि Yes. वो आप like सेकेंडली कि आपको जब आप लिखते हो आपको क्लैरिटी देता है. सो राइट, सो मेरे भी केस में मुझे बहुत क्लैरिटी आई है, बहुत सीखने को मिला है पिछले 1 साल में जितने मैंने न्यूज लेटर्स लिखे हैं. तो कल मैं मेरा 51st न्यूज़लेटर पब्लिश करने वाला हूँ. लाइक आई पब्लिश 50 न्यूज़लेटर्स. तो बहुत कुछ सीखा है पिछले 1 साल में. तो लाइक हर दिन कुछ नया सीखना, उसको ही न्यूज़लेटर में एज अ शॉर्ट फॉर्म ऐसे कुछ राइट करके पब्लिश करना. सो छोटी सी कम्युनिटी भी फॉर्म हो गई है. सो यार, राइटिंग रियली हेल्प्स फॉर अ राइटर एंड द होल कम्युनिटी. Yes, एक डेप्थ बिल्ड होता है, you know, like you get serious people who are interested. हर कोई पढ़ते नहीं है, but whoever reads, you know, they will appreciate your writings, and वो आपके पढ़ के आपके साथ अच्छा relationship भी build करता है, you know. So that is why I love writing, okay, and that is why I really love someone who actually believes in writing, ठीक है ना. So ये कुछ चीज़ है. So I have this line on my website as well, website में, ठीक है ना, if you are a writer, we are already friends, you know, because writing is not easy, ठीक है ना. तो ये कुछ चीजें हैं. सो इवन राइटिंग हेल्प्स फॉर ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर टू. इफ यू आर राइटिंग ऑन द इंटरनेट, सो इवेंचुअली यू विल बी अट्रैक्टिंग राइट सेट ऑफ पीपल फॉर योर टीम, ठीक है ना. तो ये कुछ चीजें हैं, नॉट जस्ट टीम, इवन इन्वेस्टर. So recently I met one of this investor. He told me, you know, I was reading the whole story. You know, I really love the fact that you have documented the whole thing on a, you know, on a newsletter. You know, like you have documented the whole everything that you have faced until today. आपने पूरा वो डाल रखा है, and that was one of the best way I could, you know, learn about someone.
ठीक है ना. जब कॉल पे आए तो इट वाज सो रेलेवेंट ना, इट वाज सो कूल, इट वाज लाइक यार ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, राइट. तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट राइटिंग, वेयर यू आर पुटिंग आउट द राइट थिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने क्या किया नहीं किया, आपके बैड टाइम्स गुड टाइम्स एवरीथिंग, ठीक है ना. ये कुछ कुछ चीजें हैं. सो या आई बिलीव राइटिंग रियली हेल्प्स. Yeah, and like before we end, before we go into like social media verse, so like दो तीन सवाल थे like what are 2 3 skills की like everyone should have, और like ऐसे early stages से like वो start कर देना चाहिए वो building. स्किल्स, राइट, स्किल्स. Yes, skills. Okay, so like a marketable skill, मतलब monetizable skill or like normal basic skills? दोनों बता सकते हो लाइक कि लाइक लाइक वो फ्यूचर में हेल्प करेगा, लाइक फॉर एग्जांपल राइटिंग हो सकता है या रीडिंग हो सकता है, ऐसे कुछ भी स्किल्स ऐसे लाइक Writing is easily going to be one of them. ठीक है, writing helps you become a better communicator. ठीक है, so writing is definitely going to be one thing. उसके बाद I would say like it could be very much unconventional, but I would say कि taking up one sports at least. ठीक है ना, मतलब take up one sports. क्यों ना, क्योंकि taking up sports will will क्या बोले like will give you this confidence. अलग ही confidence आपको मिलता है जब when you're playing, you're in the field, you're in the moment. So वो I would say this would be one of the thing everyone should take up. Take one sports very religiously. ठीक है, don't spare into so many things, don't expand into so many things. आप एक skill एक sports में आप develop करो अपना खुद, क्योंकि it will improve your physical fitness, आपका the way you are thinking, a lot of other things. ठीक है, and number 3 would be, it's very hard, मैंने कुछ सोचा नहीं है दिमाग में, ठीक है ना, कि like तुरंत ये बोलना है, but reading is one of them. Second is sports, ठीक है, and third could be I guess first one was writing, right? Writing, sports, and third would be I guess talking to people. I would say that because talking to people really helps you, ठीक है ना. इससे ना क्या होता है कि आप किसी के बारे में जान सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है ना. आई एम कीपिंग असाइड ऑल द टेक्निकल स्किल्स, ठीक है ना, कि टेक्निकल स्किल में आप वीडियो एडिटिंग हो गया, ठीक है, कॉपी राइटिंग हो गया, उसके बाद फिर आपने लाइक टेक्निकल स्किल्स में आप लाइक कोडिंग हो गया, ठीक है ना, कोडिंग प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है ना, देन डिजाइनिंग हो गया, वो उसको मैं अलग छोड़ता हूँ, बट आई एम कीपिंग दिस एज अ लाइफ स्किल, ठीक है, जहाँ पे आप लाइक खुद को कैसे देखते हो, ये बहुत जरूरी होता है, राइट. टॉकिंग टू समवन, कम्युनिकेशन, राइट. तो इसका सिंपल हैक ये है कि ना ट्राई टू लर्न अबाउट ह्यूमन फर्स्ट. तो इफ यू आर रीडिंग समथिंग, सो इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. सो दैट इज वन ऑफ द वे यू कैन अप्रोच टू समवन एंड टॉक टू समवन. एंड टेलिंग समवन द राइट थिंग इज अ वेरी गुड स्किल टू हैव, ठीक है. इफ यू आर सेइंग समथिंग दैट इज प्रोवोकिंग द अदर पर्सन, तो बहुत बुरा है, राइट. पीपल वोंट बी लिसनिंग टू यू एंड दे विल सिंपली बिकम योर एनिमीज, राइट. तो ये कुछ कुछ चीजें हैं दैट रियली हेल्प्स यू. तो 3 थिंग्स, राइटिंग, ठीक है, देन स्पोर्ट्स, ओके, एंड टॉकिंग टू समवन, ओके. तो इसके अलावा there are lot many other things, but I would say these 3 things are very important, and one can always have and build their career having this, ठीक है ना. Yeah, and like next question, like तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? As in, I know you are traveling a lot, पर like अगर ऐसे sum up करना है ना short thing कि like if you are working from a single place, what would be your roughly daily routine? So like waking up, then like like sort of like आप कह सकते हो like morning daily rituals जो होते हैं वो, उसके बाद फिर आपके like you go for mostly मेरे meetings होते हैं mostly, ठीक है ना, talking to people, seeing what's happening in the community, what's the latest update, फिर उसके बाद checking the email, okay. So वो कुछ चीजें होते हैं because we get a lot of emails from our members who are using Fueler, ठीक है. उसके बाद सिटिंग विद द टीम, राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन, देन कुछ रिव्यूज करने होते हैं, ठीक है ना, देन गेटिंग ऑन अ कॉल विद टीम मेंबर्स, ठीक है ना, कि लाइक हाँ ये नेक्स्ट ये करना है, वो करना है, राइट. देन उसके बाद अभी मोस्टली आई एम गेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ कॉल्स, ठीक है, स्पेशली टॉकिंग विद इन्वेस्टर्स एज वेल, ठीक है. तो वो भी कुछ रहते हैं, ओके. तो यूजुअली when I'm in my home, ठीक है, तो I have a gym too, ठीक है ना, शाम को जिम होता है, so I enjoy that. I took up gym very recently. उसके पहले I was doing in my home, but just to distract myself from the whole work thing, I took up this gym, okay, where I'm having new friends right now, where I'm building my own new friends, ठीक है ना, which are away from my work. It's a totally different new life, you can say, okay. So वो कुछ चीजें है ना, that is something I do, okay. Then food, खाना, then स्पोर्ट्स. आई रियली लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर जब like I could take up a sport as well, ठीक है ना, जिसको हम रेगुलरली खेल सकते हैं, ठीक है ना. सो दैट वुड रियली मैटर जब मे बी द सिटी I'm going to live,
तो वो भी चीज भी बहुत मैटर करेगा वहाँ पे ना, कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज है नहीं है. बेस्ड ऑन दैट आई वुड बी एबल टू मेक न्यू रूटीन्स फॉर मी, isn't it? उसके बाद फिर लाइक then again as usual food, then work, then उसके बीच में I have this what music. Music is one of the best thing, like you can say music has been one of the vital thing in my career. ठीक है, it helped me calm. ठीक है, it help you change your mood very very fast. ठीक है, आप अभी ऐसे मूड में हो, सडनली you listen to your music, आपका मूड चेंज हो गया, राइट? दैट इज रियली मैजिकल फॉर मी. उसके अलावा बुक्स, आई स्पेंड टाइम रीडिंग एज वेल. ठीक है, लॉट ऑफ टाइम स्पेशली रीडिंग, बिकॉज if I'm not learning, if I'm not improving myself, तो how can I build a company, right? तो ये कुछ चीजें हैं. So I don't have a time as a set of thing, ठीक है ना, कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये है, फिर इसके बाद ये है. अभी तक एटलीस्ट अभी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्पॉन्टेनियस. ठीक है ना, कभी ये होता है, कभी वो होता है. लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग at times. ठीक है ना, so I'm just prioritizing thing on a daily basis. या और वो स्पॉन्टेनियस भी, वो एडवेंचरस रहता है कि लाइक हर दिन कोई नया टास्क और लाइफ बोरिंग नहीं रहती. Yes, I can say that. Especially अभी traveling का time में भी हो रहा है वो. That is fine. And I just hope कि यार ऐसे ही रहे, like lifetime, because I totally enjoy this thing. I totally enjoy being in the moment, talking to people, like playing with them. So I told you, right? Even if future में अगर meetup होगा, कुछ भी होगा, तो we would go for sports. We would go for hopping, book hopping, right? We would go for cooking, right? Cloud kitchen cooking. So that will be so cool. ठीक है ना? You are, each and everyone is preparing something, and आप बना रहे हो कुछ एक साथ. Then in the end, you will have something together. So the whole people person, the whole community thing, that is something I totally enjoy. Yeah, ना? तो उसी के around I would be interested in the future too. Yeah, right. So like next like एक सोशल मीडिया वर्स्ट है. लाइक मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पूछा था कि अगर कुछ क्वेश्चंस हो रितेन के लिए रिगार्डिंग द टॉपिक, तो लाइक उसके तरफ बढ़ते हैं. Sure. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य नागपाल ट्विटर से. उन्होंने पूछा है कि if someone wants to bootstrap an idea and take it on the next stage, but unable to figure out its scalability in the users in the long run, what should he do? Okay, so see, first of all, bootstrapping really depends on the idea. ठीक है, कि आप कैसा आइडिया परस्यू कर रहे हो and how you're going to make your money. ठीक है ना, bootstrapping में money is very important. Unless you have a lot of money, ठीक है, तो आप bootstrap कर सकते हो. ठीक है, okay, but if you're not generating any cash from your users or customers, so bootstrapping is very hard. ठीक है, so I would say it depends a lot on your customer, on your idea actually. ठीक है, कि वो B2B है, B2C है, या फिर B2B2C है, right? तो ये कुछ चीजें, इवन अक्षय आई वुड से, ठीक है ना, कि यू हैव टू सी एंड फाइंड the idea you are pursuing, like what are the same companies that are doing in the same space. You have to see what they are doing, how they are generating their revenues, ठीक है ना, how they are like not turning their customers into fan. ठीक है ना, आप उन कंपनी को आपको स्टडी करना होगा अच्छे से. That is when you are going to learn कि आपको क्या steps लेना है, what are the mistakes that they are making. Based on that you can actually take your own action, you can make your own playbook. That is how you're going to execute. ठीक है ना, and bootstrapping is fancy again, ठीक है ना, but it's not easy. ठीक है ना, मतलब bootstrapping is very hard, very very hard. ठीक है ना, मतलब you will have very much limited shot. If you have money, you have lot of bandwidth to experiment, but if you're bootstrapping, you have very less bandwidth to experiment. ठीक है ना, हर एक डिसीजन आपका बहुत मैटर करेगा कि आपको कल क्या करना. ठीक है ना, if you are today deciding कि यार like if you have money, you can always hire someone, you can do something, but bootstrapping में आपको खुद करने होते हैं. bootstrapping में आपको बहुत सारी चीज खुद से like करने होती है. You have to learn that thing. It takes some time. ठीक है ना. So again, coming back to the question, I would say this is a very subjective question. आपके idea पे बहुत depend करेगा. And in a long run, even bootstrapping, yeah, obviously it works. There are so many examples we have. Zerodha is there, Zoho is there, Ease My Trip is there. ठीक है, then all these companies, even from outside, Basecamp is there. ठीक है, बहुत सारे example है. ठीक है ना. Then there is this called Jotform. ठीक है, even that company, that is bootstrap. Even they have grown into bootstrap. Then there is one more startup called ConvertKit. ठीक है, आई वुड से लर्न अबाउट देम ऑन द इंटरनेट, व्हाट देयर फाउंडर्स आर सेइंग. ठीक है, वो लोग क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ो जाके. ठीक है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, हाउ दे बूटस्ट्रैप देयर स्टार्टअप, कैसे उन्होंने लाइक मतलब पैसा जनरेट किया, राइट, हाउ दे जनरेटेड देयर कैश एंड एवरीथिंग. उसके बेसिस में यू वुड हैव बेटर आइडिया कि आपके आइडिया से आपको क्या करना है. दिस समथिंग आई वुड लाइक टू पुट अप. Yeah, and that was a nice point. मतलब like reading about other people और वो कैसे उनके लाइफ में फेलियर्स और उनके सक्सेसेस से लर्न करना. और इट्स Correct. अंकुर वारिपन ने एक चीज बोली थी कि
instead of making mistakes and learning from them and wasting time, learn from Yes. others' mistakes through reading books, articles, जो भी हो. Correct. Exactly. It reduces your it reduces the gap, right? Okay. It improves your odds, right? तो ये भी ये चीजें हैं. So this is something I would totally say. Read about them, learn about them. ठीक है. Maybe talk with them. Send out an email. ठीक है ना. बहुत time reply नहीं आएगा, but you have to take your shot, right? So read about them. Most of the time आपको मिल जाएगा content. Internet पे होता है. Use indie hackers. ठीक है ना. Indie hackers is also great platform to have. Then read Reddit. Use Reddit. ठीक है. वहाँ पे बहुत आपको अच्छे आंसर मिल जाएंगे. ठीक है ना. There are people. Then there is Quora. Right, there is this hacker news, तो इसमें आप time spend कर सकते हो. I hope this helps. So thanks Akshay for asking this question. अक्षय ने लक्ष्य था. Lakshay, sorry. I'm so sorry. Yes. Yeah. So next question साहिल ने ट्विटर पर पूछा है, what is success, like success according to you? See, success is very subjective term, right? For me, success would be waking up every day, doing the best thing that I can do, right? Talking to people, doing something that inspires me, right? That inspires the other, right? So वो मेरे लिए success होगा. Also, obviously, sports, ठीक है ना? Like having a sports, like every day, you're doing something, right? You are with your people living together, right? आप कुछ एक ऐसा चीज कर रहे हो जिसका एक कुछ value है, एक meaning है, and people are appreciating it. That is something I would say success would mean to me, right? Sitting in a room, ठीक है ना, मतलब आप like बस अपना luxury कर रहे हो. I don't think that is success for me. I wouldn't be enjoying that thing. I would enjoy more of on the field, like doing things, breaking things, building things, right, and playing on the field. So that is something I would enjoy, and that is something I would define success for me. See, it will change over time, I know, ठीक है, but अभी के लिए मेरा वो है. Yes. Oh, okay. And like दीपेश मल्होत्रा ने एक क्वेश्चन पूछा है ट्विटर पर, like ask him about the most challenging part about being a founder, as in मतलब हमने इस क्वेश्चन को मेनी पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में कर लिया है, पर अगर ब्रीफ में एक दो पॉइंट बताने हो तो what are the challenging parts? I would say like keeping the team in the same page, it's very hard. ठीक है, keeping the whole team members on the same page, everybody's thinking about the same vision, same goal is very, very hard. You have to put in efforts, you have to, put in your things, you have to create content, आप लिखो, video में जाओ, कुछ भी करो, but have conviction, you need to build conviction very, very hard way. Conviction is something, that is something not very easy. It's very hard to convince someone to do something the way you want it. ठीक है, तो building a team, building that chemistry, that teamwork thing, that sense of respect, ठीक है, that sense of belongingness, that sense of chasing a mission is very hard. ठीक है, especially being a founder. ठीक है, तो वहां पे ये चीज बहुत hard होता है, and I totally like respect and have a lot of credits to that team. मेरे team, I would like to mention them, Akib, then Anshu and Abhishek, they have seen a lot of hard times with me, with the whole team. So all the credits to them. ठीक है ना, मेरे को लगता है मैं तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना, but they have done a lot of things, ठीक है ना, all credits to them. Then eventually the whole community, right? So this is something very hard, I would say. Yes. Yeah. So नीरज पवार ने इंस्टाग्राम पर पूछा है कि how to convince parents for you doing startup instead of corporate jobs. तो like एक छोटा सा like मेरा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. लाइक मुझे भी लाइक कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, लाइक लोग बोलते हैं कि व्हाई डू यू डू दिस यूट्यूब थिंग, पढ़ाई पे फोकस कर लो, फिर कॉलेज कर लो, फिर उसके बाद कोई जॉब देख लो, क्यों करना है ऐसा, लाइक क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? सो या व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स? So in case of parents, right, I would say parents are very much like they care about you, right? It's not their fault, right? In a very simple language, you are the investment, ठीक है ना, आप investment हो, ठीक है ना, and you are literally an investment for your parents, ठीक है. So they would never want your investment to go in what vain, right? वो waste हो जाए, वो कोई कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना. They always look for that proven path कि आप इसी path में जाओ, आपको ये result मिलेगा, हम इससे खुश है, done, ठीक है ना. So to convince them, आपको उनको results दिखाने होंगे, you have to show them, कि ये चीज ऐसा होता है, इन्होंने ऐसा करा है, इन्होंने ऐसा लाया है, ऐसा करा है, आपको दिखाने होंगे. यू हैव टू शो देम. अगर आप बोलेंगे तो नहीं होगा. द ओनली वे टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू शो देम व्हाट यू कैन डू, राइट? उधर में प्रूफ ऑफ वर्क आपको दिखाना होगा. यू हैव टू
like you have to show proof of income also there, ठीक है ना? अगर आप दिखा सकते हो कि see this is the money I am making from this, okay, and like you don't have to worry about me down the line, मैं कुछ कर लूंगा. So अगर आप वो convince कर सकते हो in a good way, I guess that is where you're winning. अगर आप bluff कर रहे हो, I wouldn't recommend anyone to lie to your parents, ठीक है? Don't bluff them because eventually it will hurt you a lot, ठीक है? Don't do that, ठीक है? Try to convince them, okay? Also this is one of the greatest way to test your sales skills, ठीक है ना? आप अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे, अपने यूजर को कैसे कन्विंस करोगे, आपके बॉस को कैसे कन्विंस करोगे, आपको पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो ये भी एक चीज है, राइट? सो मे बी यूज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल, मे बी क्रिएट समथिंग, पीपीटी बना लो, बना के दिखाओ पेरेंट्स को कि देखो लाइक पापा ऐसा होता है, मम्मी ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होना होता है, इन्होंने ऐसा करा है, देखो इन्होंने ऐसा करके कुछ ऐसा करा है, मुझे भी ऐसा करना है, सो बी दैट पर्सन, टॉक टू देम डायरेक्टली, ठीक है? बात करो, लाइक इफ इट्स विथ योर डैड, ठीक है, मैन टू मैन बात करो, टॉक करो, ठीक है ना? आई नो वो आपके बात नहीं सुनेंगे, सो यू नीड टू बी ऑल्सो हैव दैट मैच्योरिटी टू टॉक टू देम, टू कन्विंस देम, ठीक है? बट नॉट इन ए रूड वे पॉसिबल, बट इन ए हम्बल वे पॉसिबल, जहां पे उनको भी लगे कि हाँ मेरा बेटा या बेटी बड़े हो गया है, या फिर दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम, राइट? तो दिस इज समथिंग आई वुड से, एंड दिस क्वेश्चन वाज वेरी न्यू टू मी, ठीक है? तो इवन आई वाज थिंकिंग कि क्या बोल सकते हैं, सो दिस समथिंग आई टोल्ड व्हिच आई आल्सो पर्सनली डिड, राइट? तो वही चीज है, आपको ये चीज बताने होंगे, ठीक है ना? राइट. तो फ्यूलर टीम ने इंस्टाग्राम पर पूछा है कि इफ यू वर टू गिव अप एंड assign your role to someone other, who will it be? Like role as in like my role in the team, right? If I have yeah. फ्यूलर टीम ने पूछा है. Okay, so the answer would be, the role would be assigned to the hustle guy, ठीक है? Okay. ठीक है ना? Okay, so that is the answer, yes. And last question, आयुष लाठी ने पूछा है इंस्टाग्राम पर व्हाट्स फ्यूलर. सो अगर किसी को बताना हो, लाइक इसका एक सब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ. इफ यू वांट टू टेल टू अ न्यू पर्सन इन ब्रीफ इन 1 or 2 lines व्हाट इज फ्यूलर, तो कैसे बताओगे? Yes, very simple. Fueler is an online platform that helps you showcase your work. That's it. ठीक है ना? मतलब बहुत ही सिंपल है. आपने क्या काम करा है, नहीं करा, उसको आप इंटरनेट में डालते हो. यू क्रिएट ब्यूटीफुल पोर्टफोलियोज आउट ऑफ इट. दैट्स इट. इट्स वेरी सिंपल आइडिया. आप जाओ फ्यूलर में, जाओ डिस्कवर पेज में जाओ, देखो लोग क्या बना रहे, नहीं बना रहे, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे सीखो, देन क्रिएट योर ओन. ठीक है? एंड क्यों बनाओगे? बिकॉज इट वुड चेंज योर करियर. ठीक है? यूड फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर. ठीक है ना? आप बता पाओगे लोगों की आपको क्या आता है, रादर आप बोल रहे हो कि मुझे जावा आता है, मुझे CSS आता है, मुझे जैंगो आता है, मुझे जावास्क्रिप्ट आता है. आप कुछ बना के उनको दिखाते हो तो इट हैज मच मोर पावर, मच मोर बैंडविड्थ. ठीक है ना? आप बस बोलते हो कि फिल्म मेकिंग आता है, बट अगर आप पूरा वीडियो बना के दिखा सकते, सी दिस समथिंग आई हैव क्रिएटेड, राइट? आई गेस दैट इज द प्रूफ. ठीक है ना? सो फ्यूलर हेल्प्स यू इन दैट. तो फ्यूलर स्टैंड्स फॉर दैट. सो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चंस. It absolutely answered the question. और that was the end of questions. मैं जो भी सारे जो लिंक्स लाइक बुक्स के हो गए या आर्टिकल्स के हो गए, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और रितिन की भी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसको फॉलो करो. लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि मैंने रितिन के बारे में देखा है कि वो अपना लर्निंग बहुत शेयर करते हैं ऑन ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया. एक ऑस्टिन केलियन ने बोला था अपने आई थिंक शो योर वर्क में कि अब इफ यू आर एन अमेचर you will be able to teach other people good. I think ऐसे ही बताया था कि अगर आप बिगनर हो तो आपको प्रोसेस पता है कि आप जुगाड़ कर कुछ भी सिखा सकते हो ठीक से, अनलाइक जो भी एक्सपर्ट है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि व्हाट इट्स लाइक टू बी बिगनर. तो यू आर अ फर्स्ट टाइम फाउंडर. तो बहुत जो हसल बुक पर काम कर रहे हो ना, that is one of the best learning. Like अगर स्टार्टअप्स के बारे में सीखना है, follow him. Great person to learn from. So yeah, thank you for being here. Thank you. Like ये मेरा first podcast recording था. So it was nice talking to you. और yeah, thanks for being here. Yeah. I guess I'm also very thankful, like for inviting me, right?
also, learning our journey, asking about our journey, what we have done and everything, and really happy and pumped up, okay, for always, like down the line future में फिर से मिलेंगे, फिर से खेलेंगे, right, मस्ती करेंगे, right, and in the way we'll do something significant, right, for our country, for our nation, right. Cheers to that. ठीक Yeah. है, thank you once again. अब मैं चलो. थैंक यू फॉर हैविंग बीइंग हियर, और मैं व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड फ्यूलर कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो. ऐसे कोई स्पैम वैम नहीं होगा, बट अच्छा डिस्कशंस होते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो या डू ज्वाइन इट. और Yes. या थैंक्स फॉर बीइंग हियर रितिन. विल like join connect later. Thank you Pranav, means a lot. थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड. अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखा हो, ये तो कमेंट सेक्शन में 1 2 3 ऐसे लिस्ट डाउन कर दो. लाइक दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा आपकी लर्निंग से, एंड विल ऑल कोलैबोरेट इन द लर्निंग. और अगर आपने आपकी एक फ्यूलर प्रोफाइल नहीं बनाया है, अगर आपने और अगर आपने आपको फ्यूलर अगर आपने आपका फ्यूलर प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाया है, अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, साइन अप करो एंड जस्ट पुट योर कॉपी पेस्ट योर फ्यूलर लिंक कमेंट सेक्शन में, कि बाकी लोग भी आपको डिस्कवर कर सके थ्रू फ्यूलर. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग till here, and yeah, I'll meet you in the next podcast. Yeah, bye guys, bye.